देखिए कोई मरीज है। आइए मैडम, पेशेंट। कमर पे फोड़ा है? अच्छा, क्या उम्र है? 4 माह। आपके क्या करते हैं, आपके घर वाले क्या करते हैं? वो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते, टैक्सी चलाते हैं? नहीं, कंपनी में। अच्छा, कंपनी में है। कितनी तनख्वाह है उनकी? उनकी 14,000। अच्छा अच्छा, तो ये ऑपरेशन आपके लिए मुश्किल होगा? जी, नहीं अफोर्ड कर सकते थे। हाँ, नहीं इंशाल्लाह बंदोबस्त हो जाएगा। Ehsaas was a very important program and one that was closest to my heart. Because all throughout my life, I have seen people being pushed into medical impoverishment, people spending catastrophically on healthcare, foregoing healthcare altogether when they're confronted with a major medical illness. As a doctor, I've seen firsthand women being taken away from hospitals, bedridden for life because families could not afford to pay for their hip operations. Ensuring financial access to healthcare is one of the fundamental responsibilities of the government. It is totally unacceptable to have individuals spend catastrophically on healthcare and get impoverished in the process or forego healthcare altogether because they don't have the financial means to pay for healthcare. One of the distinguishing features of Ehsaas was the manner in which it ensured the dignity of the patient. Because normally the patients have to line up and queue up outside offices, they have to stress that they are eligible, they have to go again and again to offices. But in Ehsaas, it's the pure click of a button and an SMS on the bedside. And in a lot of the cases, the patient would not know where the money is coming from. And basically, the doctor had the authorization to conduct the treatment within 24 hours. We ended up helping thousands of children who would otherwise needlessly die without the care that they needed at that time, for conditions that were totally correctable and conditions which insurance did not cover. So Ehsaas was an instrument that came in at that time, was responsive to the needs of a particular patient, catered to the unique situation in which the surgery had to be conducted and with which the surgeon was very familiar. It allowed the surgeon and the individual to seek care at the click of a button through just an SMS, and it was so responsive that it gave them the response within 24 hours. The records of the patient, the whole dossier was transparently archived. There was a simple sticker put on the file of that patient to signal to the hospital that the assistance for this patient is being sought through a different avenue. तो आपको ये एहसास के सिस्टम में क्या मेन आपको क्या फैसिलिटेशन नज़र आई है? सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटेशन ये है कि ऐसे प्रोसीजर्स थे जो हम यहाँ कर ही नहीं सकते, मतलब इट्स नॉट इवन पॉसिबल कि हम यहाँ पे करें गवर्नमेंट सेटअप में। अफोर्डेबिलिटी वैसे ही पेशेंट की नहीं होती, तो हम लेप्रोस्कोपिक चीज़ें जो ज़्यादातर जो लेप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट्स हैं वो हमें मिल रहे हैं एहसास प्रोग्राम से। ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा है। डिस्पोजेबल्स हैं। टोटली मरीज़ों की हेल्प हुई है, लोगों की हेल्प हुई है। मैंने देखा हुआ था कि लोगों की हेल्प करने में जो टाइम पीरियड का गैप आता है ना, मतलब वहाँ पे एक बंदा जाता है अपना ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करता है, उसको कम से कम 1 हफ़्ता तो लग ही जाता है।
उसने फिर अपनी क्लियरेंस करवानी होती थी, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाता था केस। लेकिन एहसास तहफ़्फ़ुज़ में ये था कि देयर एंड देन आके वो टीम इतनी कमिटेड थी और टीम 24 आवर्स यहाँ प्रेजेंट रहना उन्होंने, और वो फ़ौरन से बेशतर डेटा एनालाइज करते थे और वो कहते थे एहसास तहफ़्फ़ुज़ से ये रजिस्टर्ड है। हमें इतना उसकी हेल्प होती थी कि हम फ़ौरन जो है एलपी से सामान मंगा के मरीज़ को फ़ौरन पहुंचा देते थे। We started very small. We did a pilot intervention in one hospital. We learned how to upscale it in a public sector context. And then before I stepped down, we had mobilized Ehsaas Tahfuz in 16 large public sector hospitals in the country. The plan was to deploy it nationwide and to enable access of any hospital that wanted to get impaneled under Ehsaas Tahfuz. What's the best part of this program is कि जो poor patients हैं, और poor patients सिर्फ वैसे जनरलाइज poor patients नहीं, इसका पूरा डाटा है नादरा के थ्रू, हम उससे डाटा एक्सेस करते हैं, उनकी स्कोरिंग होती है, उनको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और ऑन टॉप ऑफ इट सबसे अच्छी बात यह है कि मेडिसिन वो प्रोवाइड की जाती हैं जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इससे पहले लाइफ टाइम कभी भी नहीं मिलती थी। एक्सपेंसिव मेडिसिन, सर्जरीज, फॉर एग्जांपल न्यूरो सर्जरी में हम शंट्स प्रोवाइड करते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी हम इंस्ट्रूमेंट करते हैं, ऑर्थोपेडिक में प्लेटिंग करते हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा ल्यूकीमिया के पेशेंट्स जिनके 2-2, 3-3 लाख की मेडिसिन होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, उनको हम हर मंथली उनको बुलाकर हम दे रहे होते हैं। ओपीडी कवरेज भी हो रही है, इन वार्ड कवरेज भी हो रही है, और तमाम सब स्पेशलिटीज़ में ये कवरेज हो रही है। वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, वन ऑफ अ यूनिक प्रोग्राम। मैं बहुत क्रिटिक हूँ हमेशा से सिस्टम का, और जो बाकी प्रोग्राम्स हैं मुझे प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इसमें बीइंग आई फील प्राउड कि मैं इसका पार्ट हूँ। इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल ग्रेट।